Hello everybody, welcome to Sonia IAS. We are having the topic wise discussion of previous year questions of CSAT, that is paper 2 of prelims. So today we are discussing the topic of ordering and sequencing, which comes under the section of logical reasoning. ठीक है, सो ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक की डिस्कस किए हुए हैं एंड हम रिवर्स क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं फ्रॉम द ईयर 22 टू 2011 तक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो सर हैज ऑलरेडी टॉट दिस टॉपिक वेरी ब्रीफली, सो माय रिकमेंडेशन वुड बी दैट यू शुड गो थ्रू द वीडियो ऑफ सर and then you see my video. So इस lecture series से I think after doing this you will not face any kind of problem in this topic, and I have already told you that this topic is very important because every year they ask approximately 2 to 3 questions from this topic. That is the minimum number. In some years they even asked 5 or 6 questions from this topic. Why? Because generally they give you a paragraph and then they ask you the questions. Also, there is no underlying concept of this topic. ऐसा ये mathematics नहीं है कि आपको कुछ concept है, कुछ formulas है, ऐसा नहीं है. This only needs one thing and that is practice, and this is the third time I am telling you that to solve the questions of this topic you need to be very thorough with the problems that have been asked earlier. बस इतना ही करना है आपको, ठीक है. दिस शुड बी एन इंटरेक्टिव क्लास. इफ यू फील एनी डिफिकल्टी प्लीज लेट मी नो, एंड यू ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम योर ओन. while I am solving the question, you should also try to solve the question, and then you should see if you are not able to solve the question, then you should see कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है. एंड आई थिंक ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड मोर देन 20 क्वेश्चंस in last 2 lectures of this topic. then I don't think कि आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी अगर आपने वो 20 क्वेश्चंस खुद से लगाए हैं, आपने अच्छे से मेरा लेक्चर देखा हुआ है, ठीक है. सो दिस टॉपिक इज कवर्ड बाय सर इन द CSAT course. You can see this course under my subscription section, and this under logical reasoning you will find this topic ordering and sequence, and sir has covered this topic in 2 levels, basic level and advanced level. So I think after watching these 2 videos, when you will be watching my video, my lecture, then you will see कि सारे questions आपसे बन रहे हैं, and UPSC is not going to ask anything new. जो questions आ चुके हैं उन्हीं में से कुछ मिला के कुछ नया concept बनाएंगे वो, और वही आपसे पूछेंगे, ठीक है. तो कुछ भी ऐसा नया या difficult सा नहीं आने जा रहा है. So I think we have solved some questions. I think we have solved till question number 23, and this question was asked in the year 2017. Now we'll see the first question of today's lecture. This question was again asked in the year 2017. I have already told you कि कितना important है ये topic. ये देखिए 2017 का आप फिर से एक question देख रहे हैं इस topic का. So now I'll read the question. In a group of 6 women, there are 4 tennis players, 4 postgraduates in sociology, 1 postgraduate in commerce and 3 bank employees. Very nice. Vimla and Kamla are the bank employees, while Amla and Komal are unemployed. Komal and Nirmala are among the tennis players. Amala, Kamala, Komala and Nirmala are postgraduates in sociology, of whom 2 are bank employees. If Shamala is a postgraduate, ठीक है. So in this question you can see that there are so many variables involved. You can see that in a group of, first there are 6 women, so name of 6 women, then there are 4, they are tennis, they play tennis, then they are posted in sociology, commerce, bank employees, unemployed. तो then you can see कि कितनी कितनी चीजें हैं यहाँ पर जो वेरिएबल हो सकते हैं. सोशियोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, बैंक एम्प्लॉय हो गया. Okay, so I have already told you what you should do in these kind of questions when there are so many variables involved. What you should do,
you should make the table first. आप टेबल बनाओ and then write the information according to the question. जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है आप टेबल में उसको एडिट करते जाओ, इंफॉर्मेशन फिल करते जाओ उस टेबल पे. कैसे करेंगे? I'll write. Already we have solved these kind of table questions today again. So let's say first तो मैंने टेबल का कॉलम बनाया नेम. Okay. Then 4 tennis players. Okay. So if some of them play tennis. Then postgraduate in sociology. Postgraduate in commerce. Bank employees. And I'm unemployed. ठीक है. अब एक बात बताओ आप कि क्या इसके बाद कोई एक वेरिएबल बचा हुआ है कोई भी? आई डोंट थिंक कि कोई बचा हुआ है, क्योंकि टेनिस हो गया है, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, बैंक, अनएम्प्लॉयड सब हो गया है. ठीक है. नाउ विल राइट द नेम्स. तो द नेम्स आर विमला, दिस विमला, कमला. देयर आर 6 women, राइट? विमला, कमला, आमला. तो विल जस्ट राइट दिस विमला, कमला, विमला, कमला, आमला. This is not Hashim Amla of South Africa. This is just Amla. This is a girl, right? Amla, Kamla, Komala, Komal. This is not Komala, Komal, or whatever the name is. Nirmala, Honorable Finance Minister of our country. Nirmala. 5 names are there. Is there any name left? Shyamala is also there. One last name would be श्यामला. जस्ट राइट कि आपको दिखाई पड़े ये. इट्स इससे लिख देते हैं श्यामला. ठीक है. ठीक है. So this I have made this table. Okay, so lines might not be straight, but our intent is. ठीक है, इंटेंट सही होना चाहिए, तो वो हमने बना दिया लाइन. ठीक है. अब हम इस टेबल में इंफॉर्मेशन भरते जाएंगे एंड देन दिस यू विल सी दैट हाउ ऑटोमेटिकली दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड. आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इंफॉर्मेशन देखना है एंड यू जस्ट डू द क्वेश्चन ऑन योर ओन. विमला एंड कमला आर बैंक एम्प्लॉयज. विमला and Kamla are bank employees. Okay, tick. We just mark the tick. Vimla and Kamla are bank employees. Okay. While Amla and Komala are unemployed. Amla and Komala are unemployed. Very nice. Are unemployed, right? Komala and Nirmala are tennis player. Komala and Nirmala are tennis players. ठीक है. Amla, Kamla, Komala and Nirmala are postgraduate in sociology. Amla, Kamla, Komala and Nirmala are postgraduate in sociology, of whom 2 are bank employees. ठीक है. तो ये जो इंफॉर्मेशन है 2 are bank employees, इसको हम बाद में करते हैं, because you need to see once your table is made, क्योंकि ये additional information है. This will not be used directly in your table. This will be used indirectly. You will, when the informations, whatever informations will be left, then you will use this line to fulfill those informations. Then, if Shyamala is a postgraduate in commerce, Shyamala, where is commerce? Here it is commerce. Shyamala is a postgraduate in commerce. Who among the following is both a tennis player? What we want? We want a tennis player and a bank employee. That is, who works in a bank as well as she plays tennis. इतना ही है इस क्वेश्चन में. ठीक है. तो अभी ऑलमोस्ट ये सारी इंफॉर्मेशन भर गई है.
Now we'll to see what this line meant. The two are bank employees. Whom? Amala, Kamala, Komala and Nirmala. Out of these four, there are. If you see Amala, Amala is unemployed. If Amala is unemployed, so there are four names. I'll just write the names. Amala, Kamala, Komala, and the fourth name is Nirmala. So I'll just write, we'll just see what they want to say. They want to say कि इन चार में से अमला, निर्मला, कमला, कोमला में से two are bank employees. So if we see Amla, Amala is unemployed. So if Amala is unemployed, then she cannot work in a bank. Then this is wrong. Two are bank employees. Amla cannot be a bank employee. Why? Because it has been given that Amla is unemployed. Okay. Then what is Kamla? If you see Kamla, Kamla works in a bank. It is already given. So okay. So there are two bank employees out of these four, and one of them is Kamla because that is already given, right? Now we see Komala. Komala again is unemployed. If Komala again is unemployed, then she will not be working in bank, right? If she is unemployed, then the only one remaining, Nirmala, will be working in bank. Why? Because there are two women out of these four who are working in bank. One is Kamala and second would be Nirmala. So that is Nirmala would be working in bank. Now it wants to say कि हमें क्या क्या निकालना है in our question. Both tennis player and bank employee, tennis and bank चाहिए. टेनिस खेलते हैं कोमला एंड निर्मला, बट कोमला डजंट वर्क इन बैंक. बैंक में कौन काम करता है? निर्मला. सो इफ यू सी द कॉमन ऑफ टेनिस एंड बैंक, दैट इज हु वर्क्स इन बैंक एज वेल एज प्लेस टेनिस, दैट वुड बी निर्मला. सो आवर ऑप्शन विल बी आंसर ऑप्शन सी, दैट वुड बी निर्मला. राइट? आपको लग रहा होगा कि दिस टेबल मेकिंग एंड ऑल इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट एक्चुअली ना आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो तुरंत इंफॉर्मेशन टिक करते जाते हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम. और मैं थोड़ा सा बेस से बताता हूं ताकि एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड. राइट? सबका अपना पेस होता है समझने का, तो एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम. अदरवाइज दिस डजंट टेक टू मच टाइम. दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. बस आपको इन्फॉर्मेशन फुलफिल करते हैं, यानी क्वेश्चन को देखना है, वेरिएबल्स निकालने, वेरिएबल्स को टेबल में डालना है, एंड देन यू विल बी हैप्पी बिकॉज योर क्वेश्चन हैज बीन solved. Now we'll see our next question. So if you see the next question, in a test Randhir obtained, so we'll just underline the variable or name. Randhir obtained more marks than the total marks obtained by Kunal and Debu. Okay, the total marks obtained by Kunal and Shankar are more than those of Randhir. Sonal obtained more marks than Shankar. Good. And Neha obtained more marks than Randhir. Very good. Then who amongst them obtained the highest marks? तो अब इसमें क्या है, आपसे हाईएस्ट मार्क्स पूछे जा रहे हैं. किसमें? जब दे हैव गिवन यू सम नेम्स. तो अगर क्या होता है, these are big names, right? Randhir. If you'll write Randhir every time, this will take a lot of time. So you'll just write in short. Randhir is R. Kunal is K. Debu is D. Kunal is K. Shankar is S. Randhir again. Okay, Sonal. Because Sonal and Shankar both are S, then Sonal I can write S-O. Sonal. Then Shankar is S. Neha obtained more marks than Neha. So Neha is N. So if we'll just write Randhir obtained more marks, that is रणधीर के मार्क्स ज्यादा हैं. आई हैव टोल्ड यू दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन. जिसकी तरफ मुंह खोला होता है वो बड़ा होगा क्योंकि दैट कैन ईट एनी, जो भी सामने बंदा होगा, राइट? तो रणधीर मार्क्स आर ग्रेटर देन और द मोर मार्क्स देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देबू. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दे हैव गिवन टू अस. फाइन. देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर are more than those of Randhir. This is our second condition. Actually, I also have told you that while you using this greater than or smaller than sign,
you will use the same sign. You can also write that Randhir marks are less than Kunal and Shankar's, but I'll write the same sign because then it would be easy for me, to compare the conditions or equations. Third is Sonal obtained more marks by Shankar than Shankar, and Neha obtained more marks than Randhir. So now if you see, जब मुझे हाईएस्ट मार्क्स पता करने हैं, तो अब मैं अगर देखूं कि फर्स्ट इक्वेशन से कि रणधीर के मार्क्स दे आर मोर देन कुणाल एंड देबूज, दैट इज आई कैन सी कि रणधीर के मार्क्स बहुत ज्यादा है, तो दिस कैन बी अ कैंडिडेट ऑफ हाईएस्ट मार्क्स. ठीक है, लेट्स एज्यूम कि रणधीर है, अभी हमारा कैंडिडेट रणधीर है. बट इन द नेक्स्ट केस वी सी दैट इफ वी एड द मार्क्स ऑफ कुणाल एंड शंकर, देन दीज आर मोर देन रणधीर. So the combined marks of Kunal and Shankar are more than Randhir, and combined marks of Kunal and Debu are less than Randhir. So I'm not sure. I cannot say anything whether Kunal के marks या Shankar के marks Randhir से कितने ज्यादा हैं इन दोनों के टोटल मिला के. क्या individually these two are less than Randhir, or individually Shankar is more than Randhir, because Kunal will obviously be less because इसके सम भी रणधीर से लेस हो रहा है. बट वी डोंट नो अबाउट शंकर वेदर इट इज मोर देन रणधीर और लेस देन रणधीर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी सोनल इज मोर देन शंकर. नो आई डोंट नो वेदर शंकर इज मोर देन रणधीर और नॉट. लेट शंकर इज मोर देन रणधीर. शंकर रणधीर से ज्यादा है, शंकर से ज्यादा सोनल है. अब आई डोंट नो कि तो सोनल सबसे ज्यादा हो गई रणधीर से, बट अगर शंकर लेस देन रणधीर है and Sonal is more than Shankar, and I don't know whether Sonal is getting more marks than Randhir or less marks than Randhir. Are you getting my point? And here they have given one more student that Neha is greater than Randhir. अब I don't know the relation between Shankar, Sonal and Neha कि इनमें से कौन ज्यादा है. शंकर और सोनल तो मुझे पता है कि सोनल ज्यादा है, बट आई डोंट नो कि सोनल और नेहा में क्या रिलेशन है, या शंकर और रणधीर में इंडिविजुअली क्या रिलेशन है. So if we see all these four conditions, and there would be so many number of probabilities where you can find the highest marks when you will be finding the highest marks, because कुछ भी हो सकता है. Just take one example कि let शंकर के जो marks हैं this is less than Randhir's. If Shankar's marks are less than Randhir, I don't know whether these are less or more. But if Shankar's, because the addition of Shankar and Kunal's marks is more than Randhir, so I cannot say individually about Shankar that Shankar's marks will be more than Randhir. That I cannot say. Let Shankar's marks are less than Randhir. But Sonal is greater than Shankar. That is given. Ab I don't know whether Sonal is getting more marks or Randhir is getting more marks. इन दो इक्वेशन से वी कैन नॉट फाइंड कि सोनल बड़ा है कि रणधीर बड़ा है, और इसमें से नेहा बड़ा है. इफ नेहा इज ग्रेटर देन रणधीर, देन आई कैन नॉट टेल वेयर नेहा इज ग्रेटर देन सोनल और सोनल इज ग्रेटर देन नेहा. सो देयर विल बी सो मेनी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सो यू कैन नॉट टेल प्रिसाइजली that who is getting the highest marks. You cannot tell precisely. As you cannot tell precisely, the answer will be data are inadequate. Why? Because the data given is insufficient to find out the answer of the question, and that too very precise they have asked. Okay, so you can see these four conditions are given, and when you will be trying to find who is getting the highest marks, then you will not be able to find it accurately. Okay, so I think our option would be option D, that is data are inadequate, right? So we'll move on to the next question. Okay, so this is question number 26, and this has been asked in the year 2017. 4 tests. So again I'll just underline the basic subjects. 4 tests: physics, chemistry, mathematics and biology are to be conducted on 4 consecutive days, not necessarily in the same order. The physics test is held
सो बेसिकली 4 consecutive डेज में है, तो लेट्स से ये 4 consecutive डेज हो गए, ठीक है. These are 4 consecutive days conducted on 4 consecutive days, not necessarily on the same order. The physics test is held before the test which is conducted after biology. Chemistry is conducted exactly after 2 tests are held. So if this is day 1, this is day 2, this is days. The physics test is held before the test, which is chemistry is conducted exactly after 2 tests. तो day 1 में एक टेस्ट हो गया, टेस्ट 2 में, तो this would be the position of chemistry that we inferred from this point. Chemistry is conducted exactly after 2 tests. ठीक है, ये हो गया अपना. अब मुझे ये बताओ कि now we will see this line. Why we chose this point? Why? Because the first point is somewhat confusing. Not confusing exactly, but हम second point को बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो जो easy होता है उसको हम पहले लिख लिया, information कुछ मिल गई हमें. Then it would be easy for us, to add more informations on the existing information. किसी भी नई इंफॉर्मेशन को अगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है तो मुश्किल होगा आपके लिए, पर ये आपको इतना पता है, देन आप प्रोसीड कर सकते हैं वेरी इजीली फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. सो द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि दिस इज बायोलॉजी, मैंने मान लिया. अब क्या बोल रहा है? फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट which is conducted after biology. Physics test is held before the test which is conducted after biology. तो जो फिजिक्स का टेस्ट है, फिजिक्स का टेस्ट is held before the test which is conducted after biology. तो अगर यहां पे बायोलॉजी है तो ऐसे कुछ होगा, और ये कोई सब्जेक्ट है, I don't know which subject is this. ठीक है, अब ये लाइन पढ़ो. The physics test is held before the test which is conducted after biology. So ऐसे नहीं होगा. Physics test is held before the test which is conducted after biology. Biology ये है, इसके बाद मैंने कोई एक टेस्ट कंडक्ट कराया. The physics test is held before the test which is conducted after biology. तो इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है? Physics test is held before the test which is conducted after biology. अगर ये बायोलॉजी है, इसके बाद मैंने कोई एक टेस्ट ये कंडक्ट कराया, इस टेस्ट के पहले फिजिक्स हो रहा है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन थी, देखिए मैंने भी गलत लिख दिया. You can see that anybody can commit a mistake in these kind of lines. What they have written, the physics test is held before the test which is conducted after biology. तो biology के बाद हमने एक टेस्ट कंडक्ट कराया है, उसके पहले फिजिक्स का टेस्ट है. You can see the correlation. These kind of things will be there. Biology के बाद we have conducted a test and then physics test is conducted before this final test of the test which has been conducted after biology. So these kind of things should come. Acha, if biology comes here, then what will we do? If biology is here, then this will be physics, this will be a subject which is not named, and then this will be remaining. This is our first condition. We will see whether this condition is right or not. If biology is not here, biology is here, then after biology it should be physics and then test. But the thing is, we can see that here already chemistry is given. This is a given condition. If we see, this is a given condition. This has to be true. Why? Because this has been given in the question itself. So then this condition cannot be true. Where biology test is going to be held on the second day. This cannot be true.
If biology is on the third day, then next would be physics. Then test will be over. This condition will not also be true, because this condition should be satisfied because this has been given. So there are two given condition. First given condition is this, and this is the second given condition, which needs to be true, while solving the question. Then the only possibility which is fulfilling these two given conditions would be this one. So here first day is biology, second day is physics, third day is a test which is chemistry, and the fourth day will be the remaining subject, and the remaining subject would be, there are four subjects: physics, chemistry, mathematics and bio. Biology, physics and chemistry has already been done. Then the remaining subject will be mathematics, math, right? Then which is the last test held? The last test would be mathematics, and option would be option C. ठीक है, कोई भी डाउट इसमें? तो you see कि languages भी कुछ कभी confusing सी आ जाती हैं. And I would recommend you one thing. If you are, you can understand Hindi well, or you can read Hindi. So if there is some confusion in the English language, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि what actually they want to ask, the language becomes sometimes a bit more confusing. Then what you do, आप उसी का हिंदी वर्जन देख लो, तो आपको कई बार ना चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी. And generally I personally do this in kind of in that blood वाले क्वेश्चन में, एक ही मदर के फादर के चाचा के भाई का ये है. So these kind of things when they write in English, I personally feel a little more discomfort in this kind of things. Then what I do, I see that Hindi page, and उससे मेरे लिए काफी easy हो जाता है. So I would also recommend you, whenever you feel any difficulty to understand the language, or if you think that what you are understanding is not right, then you should see the Hindi version if you can read Hindi, or you can understand Hindi. Now we'll move on to the next question. Okay, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये तो, बाप रे बाप. ईयर 2016 में, तो 2016 में यू कैन सी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बड़े बड़े. Okay, so if we see कि 6 boxes A, B, C, D and E have been painted with 6 different colors, so I'll just underline the variables. So whenever these kind of questions come, there are so many variables involved, and this only makes the problem difficult. Difficult तो क्या, ये difficult क्वेश्चन नहीं होता है, but a little bit more clumsy, and काफी सारे डेटाज आ जाते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा उनको मेंटेन करना, थोड़ा अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है. अदरवाइज क्वेश्चंस आर इजी. सो विल सी, जैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल अंडरलाइन करता हूँ, देन आई मेक द टेबल एंड देन आई फिल द इंफॉर्मेशन. एंड इफ देयर आर सम इंफॉर्मेशंस व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली इन द टेबल, देन आई राइट देम ऑन द कॉर्नर ऑफ द पेज, एंड देन आई यूज देम वंस माई टेबल इज प्रिपेयर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, एंड देन आई यूज देम टू फुलफिल द रिमेनिंग इंफॉर्मेशंस. These are some basic steps. So if I see 6 boxes, what are the 6 boxes? A, B, C, D and F have been painted with 6 different colors. What are the colors? Violet, indigo, blue, green, yellow and orange, and arranged from left to right. Okay. Each box contains a ball of any one of the following 6 games. That is, left से right: cricket, hockey, tennis, golf, football and volleyball, not necessarily in the same order. The golf ball is in the violet box and is not in the box D. The box A, which contains tennis ball, is ठीक है. The hockey ball is in the box. The box C is fifth from the right, and the box contains the hockey and ball in the ठीक है. So what I'll do, I'll just, आप इसको एक बार देख लो, मैं इसकी एक टेबल बनाऊंगा. I'll add one blank sheet here, just a second. और क्योंकि ये काफी बड़ा क्वेश्चन है तो इसकी टेबल बनाना पड़ेगा. So I'll just make a table here, just a second. Okay, so I have added one table here, one sheet I have added. So I'll just use it.
वेरी नाइस, बढ़िया, बेटर. अब I'll just, I have the whole page here, so I just do black would work. Yes, black would work here. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो टेबल बनाते हैं. देयर आर 6 बॉक्सेस. तो सबसे हम पहले बॉक्स लिस्ट लिख लें. बॉक्सेस and have been painted with 6 different colors. और स्पोर्ट्स है ना, गेम्स, colors. And the boxes are A, B, C, D, E and F. This is A, this is B, this is C, this is D, this is E and this is F. ठीक है. सो देयर आर 6 बॉक्सेस. अब इसमें गेम और कलर का हम भरेंगे. ओके, वॉयलेट एंड, ठीक है. सो फ्रॉम हियर द कंडीशन इज स्टार्टेड. द गोल्फ बॉल इज इन वॉयलेट बॉक्स एंड नॉट इन बॉक्स डी. गोल्फ बॉल इज इन वॉयलेट बॉक्स एंड नॉट इन द बॉक्स डी. गोल्फ बॉल, ये गोल्फ बॉल है. दिस इज इन वॉयलेट बॉक्स but not in D, box D. So you can see कि what I am doing, I have made this table, but अब directly box के साथ game या colors का नहीं दिया है first condition, right? They have given you one indirect information that golf ball is of violet color, but that is not in box D. So मैंने क्या किया, golf is in violet, but box D में नहीं है, it is not in the D, so I have cut. So it is for my understanding that this is some additional information given which I will use later. Once some informations that have been given directly in the exam, वो मैं टेबल में फुलफिल कर लेता हूं. ओके, ठीक है. The box A which contains tennis ball is orange in color. Box A which contains tennis ball is orange in color. Box A which contains tennis ball is orange in color. बढ़िया. And is at the extreme right. So one more information is given कि जो box A है extreme right में है. Okay, this information is already given. I have noted it down. The hockey ball is neither in box D nor in box E. Hockey ball is neither in box D nor in box E. I have used this information. I have, written this information. I'll use it later. The box C having cricket ball is painted green. Box C having cricket ball is painted green. बहुत बढ़िया. The hockey ball is neither in the box painted blue nor in the box painted yellow. Hockey yellow और blue दोनों में नहीं है. Hockey येलो ब्लू दोनों में नहीं है. ठीक है. बॉक्स C is 5th from right and next to box B. So if there are 6 boxes, right, I'll just make, if these are 6 boxes, 1 2 3 4 5 6, these are 6 boxes. A is the extreme right. A is already given, so this condition has been used. Then what they have given, box C is 5th from right. Box C is 5th from right. First, second, third, fourth, 5th. This is fourth. Box C is 5th from right and next to box B, and box B contains volleyball. Box B contains volleyball. And second, जो box B है वो C के next है. Now you need to see कि B के ना 2 पोजीशन पॉसिबल है. B कैन हियर, इधर भी B हो सकता है, इधर भी हो सकता है. Why? Because the information is given that B is next to C. That is given, right? B is next to C, but it is not given कि right में या left में. तो anything can be true. तो I have maintained it. कि देखते हैं इसको बाद में क्या बोल रहा है वो.
the box containing hockey ball is between the boxes containing golf ball and volleyball. So the box containing hockey is between golf and volleyball. Box contain hockey is between golf and volleyball. This is also one information given. So these many informations are given. Now you need to fulfill the table, and once your table will be ready, then you will be able to solve all the questions. बहुत सही. अब हम करते हैं क्वेश्चन. अगर 6 बॉक्सेस जो है वो सारे डिफरेंट कलर से पेंट किए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि एक बॉक्स किसी मतलब 2 बॉक्स सेम कलर के पेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है. 6 बॉक्सेस एंड 6 कलर्स एंड 6 डिफरेंट स्पोर्ट बॉल्स. ठीक है, तो हर बॉक्स में एक यूनिक चीज है, तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है. नाउ विल फिल द इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ इफ वी सी कि यहां पे कौन कौन से स्पोर्ट्स बचे हुए हैं. इफ वी सी कि टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट इज डन. टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट इज डन. हॉकी, गोल्फ एंड फुटबॉल इज लेफ्ट. हॉकी, golf and football is left here, और here orange and green has been done. orange green हो चुका है, तो what are left? orange and green हो चुका है. orange and green कहाँ गया? green हो चुका है. violet, indigo, blue, yellow. यहां पे क्या क्या बचे हैं? violet, indigo, blue, yellow. These are left. So why I have written these? क्योंकि ना इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी है, हमें इनमें से ही फिल करना है. तो दैट मेक्स हमने सारी इंफॉर्मेशन को अपने समझने के लिए एक जगह पे डाल दिया है, सारी चीजों को. तो ना ये हमारे लिए अब आसान हो जाएगा टू फुलफिल द टेबल. सो इफ यू सी कि बॉक्स डी को देखा. अच्छा, इस स्पोर्ट्स में जो हॉकी है, हॉकी डी एंड ई में कहीं नहीं आ सकता. तो हॉकी कैन नॉट कम हियर एंड हियर. देन व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ हॉकी? यहां पे तो हॉकी है नहीं, डी एंड डी में हो नहीं सकता. देन एफ वुड बी हॉकी. दैट वी कैन सी. सो हॉकी, वी हैव रिटन हॉकी, वी हैव कट, एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन यूज्ड. नाउ इफ वी सी golf, golf ball is not in the box D. golf box is not in the D. तो golf यहां या यहां आ सकता था, but यहां नहीं है, then golf will come here. And golf ball is of violet color. Here if it is golf, then the color will be violet. Then this information is already used. Violet done, golf done. Right? You can see कि हम कैसे इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं. You just take one, जहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, you just take one information, you fill here and automatically all things will fall into place. अच्छा, गोल्फ हॉकी हो गया, तो only sport left would be football. तो ये तो फुटबॉल हो गया. तो आई थिंक वी हैव रिटन ऑल द गेम नेम्स. हो गया है. What further information is given? Hockey is neither yellow nor blue. Hockey is neither yellow nor blue. तो yellow and blue में नहीं बचा है. Only then what option will be left? Indigo. Because now we have to fulfill 3 colors: indigo, blue or yellow. But it has been given that hockey is neither of yellow or neither of yellow nor of blue color, right? So if it is not yellow nor blue, then it would be indigo. Indigo is also there. Now if we see, is there any other? This is done. Okay. Is there any other information left? अच्छा, अब कलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है. Now the information has been given. These two information has been given. That is according to the place of the boxes. क्या उनके places हैं? But there is no information about color. Then we cannot tell about these two colors whether B box is having blue color or yellow, or D box is having blue or yellow color, because there is no precise information has been given about the blue or yellow color. Then we can write B box might have blue color or yellow. We don't know,
because only this much data has been given. Same, D box might be having yellow or blue color. ठीक है. Now we need to use these two informations to decide the positions of the ball. So if we see, golf ball is E, golf is E, hockey is F, and volleyball is B. अच्छा, volleyball is B. Now you can see, you need to, क्योंकि B यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. Now you need to decide कि B की सही पोजीशन क्या होगी. अच्छा, you can see कि hockey is between volleyball and golf. Hockey is between volleyball and golf. So if B का पोजीशन मैं ये ले लेता हूं, if I remove this, मैंने B का पोजीशन ये ले लिया. If this is B, this is volleyball, right? Then this will be, because volleyball और golf, then this will be golf, और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? Hockey. But hockey is F, hockey is not C. C has been given कि ये right से fifth है, right? C is not, C is cricket, C is not hockey. और हमारी कंडीशन के हिसाब से वॉलीबॉल और गोल्फ के बीच में हॉकी होना चाहिए. दैट मीन्स बी की पोजीशन ये नहीं होगी, राइट? बी की पोजीशन ये नहीं होगी, तो वी विल इरेज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नाउ व्हाट वाज द अल्टरनेट पॉसिबिलिटी ऑफ बी? सी के नेक्स्ट. इफ बी इज दिस इज वॉलीबॉल, अगेन दिस कैन नॉट बी गोल्फ, क्योंकि वॉलीबॉल और गोल्फ के बीच में हॉकी है, बट दिस इज क्रिकेट. This cannot be golf. So if this is volleyball, then this will be golf, and golf is E. And between B and E we have F, that is hockey. So if we see A, B, C, then this must be D. So these are the positions of boxes A, B, C, D, E and F. Now we will see the questions, what they have asked. The next question, the question is, which one of the following box contains the golf ball? Golf किस box में है? Golf is in box E. Right? कोई confusion इसमें? Next question is, which of the following statement is correct? D is painted yellow. D is painted blue or yellow? No, we cannot tell that D is painted yellow. Wrong. This might be painted yellow, but we cannot tell exactly कि ये yellow paint हो रहा है, ये blue भी हो सकता है. B is painted blue. B is painted blue. Again, we cannot tell whether it is blue or yellow precisely. So it can be blue or yellow. This is also wrong. All of the above तो हो ही नहीं सकता. Why? Because these two options are already wrong. Then option will be F is painted indigo. But we'll check. F is painted indigo. Right? बहुत बढ़िया, सारे सही हो रहे हैं. The football is in the box of which color? Football is in the box of D. Of which color? D is blue or yellow? Yellow indigo cannot be determined. Yes, it can be either blue or yellow. You cannot tell precisely. If it has been written कि blue or yellow में है, then also this option was correct. Why? Because इन दो कलर में ही कोई योग होगा, पर एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ब्लू होगा कि येलो होगा. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. दिस इज द टेबल. इफ एनीबडी वांट्स टू नोट डाउन, आई जस्ट मेक यू रिवाइज कि व्हाट आई हैव डन इन दिस क्वेश्चन. हमने पहले टेबल बनाई, द इंफॉर्मेशन गिवन वी हैव नोटेड डाउन. वी हैव नोटेड कि व्हाट ऑल information is not given, यहां पे लिखा. we have noted down some additional informations here, जो indirect informations दी हैं, जो we can not use directly in the table. And once we made the table with the information already given directly, then we used one by one conditions कि किस condition को हम use कर सकते हैं. And then one by one when we will be using the conditions, तो एक के बाद एक condition इसमें fit होते जाएंगे automatically, and then it would take you to the solution of the problem. ठीक है, आई जस्ट गिव यू अ मिनट, आप इसको नोट कर लो एक बार अगर किसी को नोट करना हो तो.
Okay, so we will move on to the next question. Directions for the following 3 questions, and this question was asked in the year 2016, so you can just write. This question was asked in the year 2016. When 3 friends A, B and C met, it was found that each of them wore an outer garment of a different color. Outer garment of a different color. In random order, the garments are jacket, sweater and tie, and the colors are blue, white, black. Their surnames in the random order are Ribeiro, this is a somewhat new name, right? Kumar and Singh. Further, we note that they have given you some condition. Neither B nor Ribeiro wore a white sweater. C wore a tie. Singh's garment was not white. Kumar does not wear a jacket. Ribeiro does not like to wear the black color. Each of the friends wore only one outer garment of only one color. So this 6 points becomes important. Why? Because किसमें क्या बोल रहा है? You just read the point. Each of the friends wore only one outer garment of only one color. मतलब जो भी हर बंदा है, he is wearing only one outer garment. मतलब या तो वो जैकेट पहने होगा, या तो वो स्वेटर पहनेगा, या टाई पहनेगा. तीनों नहीं पहनेगा या दो नहीं पहनेगा, only one, and that is of only one color. मतलब जैकेट या किन्हीं दो आउटर गारमेंट्स का कलर सेम नहीं हो सकता, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल ब्लू कलर की जैकेट और स्वेटर दोनों नहीं हो सकते या तीनों नहीं हो सकते. एवरीबडी हैज अ यूनिक कलर, एवरीबडी इज वेयरिंग अ यूनिक गारमेंट, एंड यू कैन सी कि जब आप ना सारे ड्रेसेस में 3 आउटर गारमेंट पे 3 डिफरेंट कलर्स यूज हो रहे हैं, दैट इट वांट्स टू से ओनली वन आउटर गारमेंट ऑफ ओनली वन कलर, राइट? कलर रिपीट नहीं हो रहा है, सबके डिफरेंट कलर है, सबके डिफरेंट गारमेंट है, डिफरेंट पर्सन है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. सो अगेन व्हाट आई विल डू कि ना यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा, तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट ऐड वन न्यू स्लाइड हियर. Okay, and then we will fill the informations. When 3 friends A, B and C met, it was found that each of, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना नाम I'll make the table. Friends जो भी नेम है उनका, देन ड्रेस क्या क्या है इनकी, जैकेट, स्वेटर एंड टाई. लेट्स से दिस इज जैकेट, sweater, tie, and then what are the colors? Blue, white and black. Okay. And their surnames. अच्छा, A, B and C and Ribeiro, Kumar and Singh are same persons. इन्हीं A, B, C में से कोई Ribeiro है, कोई कुमार है, कोई सिंह है. That we need to identify because उनका नेम दिया है 3 friends and their surnames are already. So these are the surnames of these A, B and C. Okay, so you need not to be confused कि A, B और C और ये लोग अलग अलग है. They are same persons, but we only know by the name of A, B and C, and this is their surnames. Now you need to find कि A, B and C में से कौन सा Ribeiro है, who is Kumar and who is Singh. Okay, I have your color. So what I'll do in the table कि information के हिसाब से I'll just mark the tick कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, right? So neither B nor Ribeiro wore a white sweater. अच्छा, I'll just write the name. Ribeiro. This is Ribeiro. This is a unique name. Ribeiro. This is Kumar. This is Singh. And what I'll do, I'll just make it here. I'll just write A, B. Even though they are same persons, but informations scattered way में दी है, तो I'll write like this. And then C. Okay.
So the first condition is neither B nor Ribeiro wore a white sweater. तो रिबेरो ने ना स्वेटर पहना है ना कलर ऑफ व्हाइट है. नाइदर बी नॉर रिबेरो, नाइदर बी ने भी व्हाइट और स्वेटर नहीं पहना है. ऑल्सो द एडिशनल कंडीशन इज गिवन कि नाइदर बी नॉर रिबेरो, दैट मीन्स द सरनेम ऑफ बी इज नॉट रिबेरो. बी एंड रिबेरो आर डिफरेंट पर्सन्स. दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर. B and Ribeiro are not same persons. This has been given in the first condition and many people will miss this condition कि neither B nor Ribeiro. इसका मतलब है कि B and Ribeiro दोनों अलग अलग इंसान हैं. अगर आपने ये कंडीशन मिस कर दी ना, this is the hidden condition. This is a hidden condition in these 6 conditions. This is a very important condition because if you will not get even one information, then you will be not able to solve the question. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि B and Ribeiro, these are different persons, right? That's why I tell you कि जब इंग्लिश में कुछ भी दिया जाए तो या किसी भी लैंग्वेज में दे तो you need to be very focused, very attentive कि what they are trying to ask. That's why even in your GS mains, you know, mains के क्वेश्चन में भी the biggest, the most difficult thing what students feel कि they generally don't understand the demand of the question. एग्जाम में वो कुछ भी पूछ रहा है, हम कुछ भी बता रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लिखेंगे तो हम वही जो हमें आता है पूछो तुम कुछ भी लो. यू नो, इफ दे आर आस्किंग व्हाट डू यू थिंक शुड दिस स्कीम बी कंटिन्यूड और वेदर दिस स्कीम इज सस्टेनेबल और नॉट, और हमने क्या लिख दिया, हमने स्कीम के बारे में लिख दिया दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड दिस एंड इज बीन लॉन्च्ड बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ऑल. और फिर आपने लिख दिया, आपने उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए. This is not the answer. They are generally asking कि भाई what you think, कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. होना चाहिए तो substantiate your answer, या नहीं होना चाहिए then substantiate your answer. ठीक है, और जो भी आप उसका एक वे फॉरवर्ड दे दो कि यार ठीक है स्कीम इज गुड बट थोड़ा सा हमें इसमें ये 3 स्टेप 4 स्टेप बेटर कर देंगे तो स्कीम बहुत बढ़िया हो जाएगी. So these kind of things you should remember कि यार what they are writing that you should be focused upon. Then the next topic is C wore a tie. C wore a tie. C wore a tie. बहुत बढ़िया. Now we see Singh's garment was not white. Singh's garment was not white. ठीक. Then Kumar does not wear a jacket. Kumar does not wear a jacket. बहुत बढ़िया. कुमार जैकेट नहीं पहनता है, नहीं पहननी चाहिए. Ribeiro does not like to wear the black color. Ribeiro क्या बोल रहा है, ब्लैक भी नहीं पसंद है यार Ribeiro को. तो Ribeiro बढ़िया इंसान है, ना ब्लैक पसंद है ना व्हाइट पसंद है, पहनेगा क्या. ठीक है. These information, these 5 conditions, 6 conditions we have already used. ठीक है. Now we have this table. Now you need to fill all the details. Oh, what will I do? अब क्या करना है? So if we see कि Ribeiro, anybody, 3 लोग हैं, 3 different color पहनेंगे. Ribeiro cannot wear white and black. Then what will Ribeiro wear? He will wear blue. So if we just write कि Ribeiro क्या पहनेगा? Ribeiro will wear blue. अच्छा, Singh, what option Singh have left? Singh cannot wear white. So Singh can wear blue or black. Blue or black. But blue has already been worn by Ribeiro. So the option Singh has only black. Because Singh white पहन नहीं सकता. Blue already Ribeiro पहने तो blue भी नहीं पहन सकता. Then what will Singh wear? Singh will wear black. Singh will wear black. अब now we see कि कुमार blue नहीं पहन सकता because this has been worn by Ribeiro, and Kumar can also not wear black because this has been taken by Singh. Then what will Kumar wear? Kumar will wear white. So Kumar will wear white. So I have just, you know, for my understanding I wrote in the corner कि भाई मैं क्या समझ रहा हूं. अच्छा, B कैन नॉट बी रिबेरो, ये एक कंडीशन में दी हुई है. नाउ इफ वी सी हियर इन दिस टेबल, जहां पे मुझे 2 इंफॉर्मेशन दी है मैं उधर पे जा रहा हूं. C wore a tie, ठीक है. तो व्हाट ऑप्शन B हैज? B कैन वियर जैकेट बिकॉज B कैन नॉट वियर टाई बिकॉज टाई इसने C ने पहन ली है. तो B कैन वियर आइदर जैकेट और स्वेटर. स्वेटर में नहीं पहन सकता है. देन B वियर
जैकेट। स्वेटर क्यों नहीं पहन सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है। B will wear jacket. So if we write like this, A, B, C, B will wear jacket, C will wear tie, then what A will wear? A, jacket, he cannot wear jacket because B has already taken that jacket, C has taken tie, so A ये भी नहीं पहन सकता, then A must wear sweater, तो A ने sweater पहन लिया. You can see how we are getting the information. Now if we see कि B cannot wear white, B cannot wear white, right? B white नहीं पहन सकता है and B is wearing jacket, then the color of jacket is not white. That means jacket is either of blue color or jacket is of black color. अगर नहीं समझ में आया तो I'll just write from black pen. ठीक है. So how will we got this? How will we get this? कि B cannot wear white. B is wearing jacket. So jacket cannot be of white color. As jacket cannot be of white color, then jacket can be of only two, blue or black. अच्छा, बहुत बढ़िया. B white पहन नहीं सकता. अच्छा, Ribeiro is wearing blue. Ribeiro is wearing blue. ठीक है. So Ribeiro is wearing blue. Jacket is of blue or black color. ठीक है. Now if we see what further information do we have? Ribeiro. So what Ribeiro can wear? Ribeiro can wear. Acha, we can see Ribeiro cannot wear sweater. So Ribeiro can wear two things. Ribeiro cannot wear sweater. So Ribeiro can wear either jacket or tie. Sorry. Ribeiro can wear either jacket or tie. These two options Ribeiro has. Why? Because it cannot wear sweater. And Kumar has two options, that it can wear either sweater or tie. Why? Because it cannot wear jacket. And Singh can wear anything. जो भी ये दोनों पहन लेंगे, जो बच जाएगा वो सिंह पहन लेगा. He is a very understanding kind of person. ठीक है. अच्छा, B cannot wear white. Ribeiro also cannot wear white. ठीक है. अच्छा, now what will we do? Let's think कि क्या करना है इसमें. देखो, these kind of questions, they are a little bit confusing. तो इसमें अब आप क्या करेंगे? तो Ribeiro wears blue. ठीक है. तो that means this jacket or tie, anything should be of blue color, right? अच्छा, also Ribeiro cannot be B. तो Ribeiro या तो A हो सकता है या C हो सकता है. Ribeiro cannot be B. तो Ribeiro can either be A or C. A is wearing sweater and C is wearing tie. Ribeiro can only be. अच्छा, इधर पे ये भी लिख लो आप. Ribeiro can only be A or C. Why? Because Ribeiro cannot be B. This is the first condition. So Ribeiro cannot be B. So Ribeiro can either be A or C. अच्छा, Ribeiro can either wear jacket or tie. तो A is wearing sweater. If A is wearing sweater, but Ribeiro cannot wear sweater, then A is not Ribeiro. The surname of A is not Ribeiro. And A is wearing sweater. ठीक है. Then Ribeiro will be C. Ribeiro will be C. And C is wearing tie. That means jacket भी नहीं पहनेगा. And if tie has been worn by Ribeiro, then Kumar will be wearing sweater. Then Ribeiro will be wearing tie. Very good. Kumar will be wearing sweater. Very good. Then Singh would be wearing jacket. This will be the solution.
ठीक है, रिबेरो इज सी, तो सेम रिबेरो कौन हो गया, सी, तो बिल्कुल कुमार हो गया स्वेटर पहनने वाला, दैट इज कुमार वुड बी ए एंड सिंह विल बी बी। So then this will all be fulfilled. So did you get how I reached in this problem? कि we have wrote all this कि ये है, now we were stuck कि यार कैसे होगा, तो what I wrote कि रिबेरो has two things, या तो वो जैकेट पहने या टाई पहने because he cannot wear sweater, and कुमार can only wear either sweater or tie because it cannot wear jacket। ये मैंने दो possibilities लिख ली। अच्छा, मैं आई ऑल्सो नो कि रिबेरो कैन नॉट बी बी और बी कैन नॉट बी रिबेरो, दोनों सेम पर्सन नहीं है। इसका मतलब कि रिबेरो कैन आइदर बी ए और सी, तो रिबेरो की दो पॉसिबिलिटीज ए या सी हो गई। बट आई ऑलरेडी नो कि ए इज वेयरिंग स्वेटर एंड सी इज वेयरिंग टाई। इफ ए इज रिबेरो, ठीक है, but if A is wearing sweater but Ribeiro cannot wear sweater, that is given, that means Ribeiro cannot be A, then the only possible option left what Ribeiro would be C। तो Ribeiro हमें पता चल गया भाई Ribeiro C है। अब Ribeiro is C, then C is wearing tie, then out of jacket and tie we have eliminated jacket and then we find that Ribeiro is wearing tie। अच्छा, कुमार के पास दो ऑप्शन थे कि स्वेटर टाई पहन ले, बट टाई तो रिबेरो ने पहन ली। Then what Kumar will do? Kumar will wear sweater because he cannot wear jacket। अच्छा, कुमार एंड रिबेरो ने दोनों ने मिलकर टाई और स्वेटर को खत्म कर दिया। Then what option left for Singh? That is jacket। अच्छा, Kumar is wearing sweater and sweater is by A, then Kumar is A, and jacket is worn by B, then Singh is B। So we can find all this। ठीक है, now we'll see the question। The first question is what is C's surname? So who is C? C is Ribeiro। Option A, बढ़िया। So you can see that once your table is ready, then it becomes a cakewalk for you to solve all 3 or 4 questions। I understand कि टेबल बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट इफ यू विल रीड लाइन बाय लाइन तो आपको बहुत आसानी से कर लेंगे आप। व्हाट इज द कलर ऑफ द टाई? टाई का कलर क्या है? टाई का कलर, टाई इज वेयरिंग बाय रिबेरो एंड रिबेरो इज वेयरिंग ब्लू कलर, दैट इज टाई कलर इज ब्लू। ब्लू ऑप्शन है, यस। टाई का कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। ठीक है, अब आप लास्ट क्वेश्चन है हु वोर द स्वेटर? तो स्वेटर कौन सा किसने पहना है? हु वोर द स्वेटर? तो अगर हम देखें अपने उसमें, स्वेटर इज वर्न बाय कुमार, कुमार इज ए, ठीक है, तो स्वेटर इज वर्न बाय ए, दैट इज कुमार ने स्वेटर पहना है। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो यू कैन सी कि डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस, प्रैक्टिस चाहिए। These are easy questions, but I would recommend कि इन questions को आप दोबारा खुद से करने की कोशिश करें, and if you find any difficulty, then only you watch my this solution again। वरना आप पहले देख सकते हैं, समझ लीजिए कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहा हूँ, and then you try to solve the questions। ठीक है, so I think we'll conclude the session here only। In the next class, we will do the remaining questions of this topic, ordering and sequencing। Till then, study very hard, work very hard, all the very best, and we'll meet in the next session। Thank you for watching the video।